जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। 1965 की जो वॉर थी इंडो पाकिस्तान, उसके अंदर काफी चीजें अभी भी, जैसे 1971 की स्टोरी सबको पता है, वो चीजें अभी भी छुपी हुई हैं। कई लोग बोलते हैं कि कई कई गलत डिसीजंस लिए गए, गलत इंफॉर्मेशन दी गई गवर्नमेंट को। काफी स्टोरीज हैं शास्त्री जी के बारे में, काफी स्टोरीज हैं, बहुत दूसरी दूसरी इधर उधर के एंगल्स की स्टोरीज हैं। और उस टाइम पे 1962 का जो एक झटका भारत को लगा था, जिसके बारे में हमने शिव कुणाल वर्मा जी से बात करी थी, जो हमारे साथ आज हैं। बट आइए देखते हैं, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एक्चुअली इन दैट वॉर, जो हमको पता नहीं है। वॉर की स्टोरीज, लोगों का धैर्य, लोगों की जाबाज, हमारे जो जवान, उनकी स्टोरीज तो सबको पता है, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या हुआ उसके बारे में आज जानेंगे। सर नमस्कार, वेलकम टू द शो। Thank you, Aadi. Lovely to be with you as usual. And before anything else, let's make one thing very clear. 65 was an Indian victory. Whether you किसी भी तरफ से आप उसको देखिए, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। और ये लड़ाई 6-7 स्टेजेस में हुई है, और हर एक स्टेज में जी, पाकिस्तान के जो भी उन्होंने अटेम्प्ट किया वो नाकाब हो गया। आई मीन इट हैज नॉट वर्कड आउट। सो ये जो डिबेट है ना कि ये पाकिस्तान जो बोलता है, ये बोलते हैं, वो बोलने दो उनको। उनकी तो आदत ही है बोलने की। वो तो लेकिन 71 भी जीते थे सर, वो तो अब छोड़ देते हैं, कोई बात वो नहीं। तो अभी चांद पे भी झंडा उन्हीं का लगा हुआ है, तो और क्या बोले। चलिए। कब इनके प्रीवियस आर्मी चीफ ने बोला था ना कि वो तो हमारे सिर्फ 30,000 लिए थे, और वो भी आधे से ज्यादा सिविलियन थे, सारे वर्कर थे, और हम तो जीते गए, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। दैट्स हिज वर्ड्स। सो नहीं, थोड़ा सा ना, अगर आई थिंक अगर ये मिलिट्री हिस्ट्री के एंगल से देखा जाए, अगर पाकिस्तान की जो जनता है, जो हम दे उनके मैं कई प्रोग्राम देख रहा हूँ, कभी 65 पे भी देख रहा था। एक काइंड ऑफ चेरी पिकिंग तो एक बहुत ही माइल्ड टर्म हो गया उनके लिए। वो बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते कि हुआ क्या, तो फिर आप उसको आप आगे कैसे ले जाओगे। तो फिर वो पब्लिक उसी उसी साइकिल में फंसी रहती है। हमारी भी बहुत गलतियां हुई हैं, एज यू पॉइंटेड आउट। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू सी दोज मिस्टेक्स एंड टॉक अबाउट इट। क्योंकि अगर आप उनको भी केवल कार्पेट के नीचे डाल देंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ। मिलिट्री हिस्ट्री तो फिर प्रोपागेंडा ही बन जाएगी ना। एग्जैक्टली, मैंने इस तरह से इसी वजह से शुरू करा सर, बिकॉज आई गेस पाकिस्तानी तो जो स्टोरी सुनाते हैं वो ठीक है, लेकिन जो स्टोरी हमको सुनाई गई सर, ये वॉर कैसे शुरू हुई, ये तो इसका तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक हमको बताया जाता है कि भारत की जो यू नो तो युद्ध में हमको एक खराब एक्सपीरियंस हुआ 62 में, चाइना से हमारी हार हुई। उसके बाद पाकिस्तान को बढ़िया एक जोश सा चढ़ा हुआ था, तो उसने एक ऑपरेशन प्लान करा और उसने अटैक कर दिया, और फिर जंग हो गई। दिस इज़ अ कॉमन नैरेटिव जो सबको एक पता है, बट इसके पीछे काफ़ी, जैसे आपने बोला, 6-7 पार्ट्स में हुई थी ये वॉर, और इसका एक प्रीलूड काफ़ी टाइम से चल रहा था सर। तो पहले उसकी बात करते हैं, लेट्स ट्राई एंड फाइंड बैक स्टोरी क्या है सर? 65 की जो 65 की जो लड़ाई है, ये 62 की कंटिन्यूएशन है। बल्कि इन माय बुक आल्सो वेस्टर्न सनराइज आई से दैट पहला चैप्टर इसी के ऊपर है। अब उसके लिए आपको जिस दिन सीज़फायर डिक्लेयर हुआ है, उसी दिन से आपकी कहानी एक्चुअली शुरू होती है। क्योंकि उसी दिन आपकी 2 या 3 चीज़ें हुई हैं। एक तो आपके आर्मी चीफ बदल गए थे। हुँ, आपके जनरल ये चौधरी आ गए थे। थापर रिज़ाइन हो गए थे। और आपके नए डिफेंस मिनिस्टर आ गए थे, चौहान साहब। और उसी दिन नेहरू का काफ़ी, वो पिछली बारी भी हमने बात की थी उसके बारे में भी, कि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, एम्बेसी ने नहीं बताया था कि ऐसे-ऐसे हो गया, कि सीज़फायर हो रहा है। पर जब ये सब हुआ है, तो उसमें बहुत सारे देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच हैड हैपेंड इन 62, जिसका फॉल आउट बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द अमेरिकन एड व्हिच वाज फ्लोइंग इनटू इंडिया इन अ बिग वे। दिस वाज मेकिंग पाकिस्तान बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे थे, क्योंकि वो यूएस को अपना मेन एलाई सोचते थे ना। सारा उनका जी। इक्विपमेंट आइजनहावर के विजिट 56 बाद, इक्विपमेंट क्या, उनका पूरे डॉक्ट्रिन्स, वॉर डॉक्ट्रिन वगैरह सब बदल गई थी। सो दी जो पाकिस्तानी साइड थी, वो बिल्कुल ही कंप्लीटली अमेरिकन कैंप में थी, और उनको इंडिया के साथ अमेरिका का कुछ भी एड वेड उनको बहुत
वो लग रहा था, इट वाज रियली हर्टिंग देम। उसमें ये ब्रिटिश का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि जो अंग्रेज थे उस टाइम, वो उस टाइम नहीं, अंग्रेज हमेशा ही ऐसे रहे हैं, वो अपना उस चाबी घुमाने में वो सबसे तेज है। तो अमेरिकन एड आ रही थी, अमेरिकन जनरल्स आ रहे थे, अमेरिकन डिप्लोमेट्स वगैरह सब, दे वर ऑल कमिंग इन ऑन द कि ये कम्युनिज्म के साथ लड़ाई हो रही है चाइना के साथ। लेकिन इसमें अंग्रेज भी बहुत घुसे हुए थे, और इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला यूएस के ऊपर कि जो आप एड दे रहे हो इंडिया को, आप इसको जम्मू एंड कश्मीर के साथ लिंक करिए। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। सो अमेरिकन वो इतना ज्यादा, दे वर नॉट वांटिंग टू लिंक इट टू जम्मू एंड कश्मीर, बट द ब्रिटिश केप्ट सेइंग कि यू लिंक इट टू दिस, यू लिंक इट टू दिस, यू लिंक इट टू दिस। And another very important thing happened, which if you just go through you do your own research, you'll find that Mountbatten had made 3 visits to India in the immediate aftermath of the 62 conflict. जो आदमी वाइसरॉय रह चुका था, अभी वो उसका उस टाइम पे 61 और 62 के आसपास, ही वाज द सीडीएस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और कंबाइंड जो भी उनका था। अब ये आदमी जो वाइसरॉय रह चुका है, यहाँ पे आके सीडीएस के रोल में आएगा। 3 ट्रिप्स मारे हैं उसने। एंड मैं एक दिन चौहान साहब के जो पीएस थे, प्रधान साहब, जो खुद अरुणाचल के बाद में गवर्नर भी थे, मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा ये चौहान साहब और शास्त्री जी और ये सब लोग, उनका क्या एटीट्यूड था टुवर्ड्स माउंट बैटन? तो कहते थे कि उनको इतनी चिढ़ थी उसके साथ कि अगर वो उनको मिलता भी तो उनको बस हेलो हाय, जितना मिनिमल प्रोटोकॉल के हिसाब से आप नमस्ते करके निकल जाओ, उससे उससे ज्यादा कोई उसे मुंह ही नहीं लगना चाहता था। एंड ही वाज, उसके लिए एक, आप राष्ट्रपति भवन की आर्काइव में देखिए, आपको फोटोग्राफ्स मिलेंगी, ये वो। तो जहां भी जा रहे हैं वो नेहरू जी के साथ है, इज इंटरेक्टिंग विद हिम। नाउ ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो इसमें स्पेकुलेशन है कि बात क्या हो रही थी। इसमें क्या हुआ था कि माउंट बैटन जब वापस गए थे 47 48 में, इनको चर्चिल ने इनका कान ऐसा मरोड़ा कि तुमको भेजा था हमने कश्मीर का हैंड ओवर टू पाकिस्तान, तुमने जाके क्या कर दिया है against British interests. Mountbatten, from the British point of view, Mountbatten was a disaster. वेवल वॉज नॉट अ particularly, वो उनका और भी डेंजरस प्लान था, पर वो अलग बात है। लेकिन जब माउंट बैटन वहां गए हैं, और जो इन्होंने पुरानी 1919 की फाइल वगैरह निकाल निकुल के इन्होंने जो रेड क्लिफ लाइन वगैरह बनाई है, जब इसे गुरदासपुर वगैरह की जो छेड़खानी की और इंडिया को उसमें फुटहोल्ड मिल गया, इसमें चर्चिल इससे इतना अपसेट था कि जब ये वापस गए माउंट बैटन, चर्चिल उनसे कभी बात नहीं की। He said, you are let down to because the whole thinking was different. British interests were paramount here. उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपके 1.5 मिलियन हिंदुस्तानी पार्टीशन में मर जाए, अगर एक अंग्रेज मर जाता तो वो न्यूज में आ जाता, पर वो 1.5 मिलियन को कोई नहीं पूछने वाला था। उस किस्म का माहौल था। और माउंट बैटन स्टार्टेड टू वर्क ऑन नेहरू, और सारे उनको बोलने लगा कि देखिए, आपका जो अनफिनिश्ड, आपको 62 में जो है वो ठीक है, वो चाइना के साथ है, वो ये वो आपका जो टसल है माओ के साथ, उसमें हम आपको हेल्प तो कर, ब्रिटिश और अमेरिकन तो आपको बहुत एड देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके अभी भी अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ कश्मीर है। Now, if you look at the events, I'm simply going by the events. I'm not trying to speculate beyond a point. Nehru, at this stage, suddenly pulls out Sheikh Abdullah from jail and sets him free and says, go and discuss with Ayub Khan, the division. And army headquarters was also told to work out plans for the division of the valley. This is well known. पालत की किताब में दिया हुआ है पूरा। वो तो अपने पूरा, वो स्वर्ण सिंह की का पार्टी गई वहां पे, और फिर वो लकीली फॉर अस भुट्टो अपने ट्रिप पे थे, और भुट्टो जी ने क्या किया, जाके जिस दिन हमारी कमेटी पहुंची है और 11 बजे मीटिंग थी या 12 बजे मीटिंग थी, 9 बजे पाकिस्तान रेडियो पे खबर आ जाती है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ ये शसगाम वैली पे समझौता कर लिया है। तो ये पूरी टॉक्स कोलैप्स हो गई उसके ऊपर। नहीं तो दे हैड एग्रीड, नेहरू हैड एग्रीड, दे दो, डिवाइड द वैली, and the unfinished agenda of Kashmir with Mountbatten was working on him, he was willing to do it. Then when Nehru passed away in March or April I think 64, uh, ये शेख अब्दुल्ला was with Ayub at that time. The final touches दे रहे थे इसका पूरा
प्लान का। तो ये सारा का सारा collapse हो गया, and there was a change in leadership. Now Shastri was not a out of the blue kind of a thing. वो होम मिनिस्टर रह चुके थे 62 में, he was the home minister and he was a tough home minister. He was a उनकी रेपुटेशन काफी अच्छी थी। लेकिन अयूब खान की तरफ से देखिए ना, अयूब खान was this Khan साहब, he did a lot for Pakistan, and as a president he was perhaps one of the better presidents they've had. मॉडर्न पाकिस्तान के तो वो फादर माने जाते हैं, लेकिन एज एन आर्मी ऑफिसर ही वाज अ डिजास्टर। ही वाज एक्चुअली, अयूब खान हैड बीन विद वन असम जब इसको रेस किया गया था जसामी के पास, जब लड़ाई शुरू हुई थी, इसका पहला सीओ था। इसकी तो इतनी खराब रिपोर्ट थी, दे सेड ही द कावर्ड, दे सेड ही द कावर्ड, एंड उसको साइडलाइन कर दिया था। अगर पाकिस्तान नहीं क्रिएट होता और ये ब्रिगेडियर साहब वहां नहीं पहुंच जाते, तो अयूब खान तो फिर पंजाब बाउंड्री फोर्स तिमाया के साथ भी थे ना वहां पे। हिज रेपुटेशन वाज एब्सोल्यूट रबिश एज एन आर्मी ऑफिसर, but as an individual and as a person, he was well liked. It's a bit of a strange paradox, but it is there. And he did a lot for Pakistan. And he had this huge dream about this thing. And now suddenly Nehru is replaced and you've got this Shastri. And इनके पूरा एटीट्यूड था कि ये धोती वाला कहाँ से आ गया, ये तो उसका साइज देखो, मैं 6 फुट जो भी हूँ और ये 5 फुट के हैं, ये मेरे सामने कहाँ खड़े होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थिंग। अगर आप उस एरिया को देखिए ना, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पठान्स एंड दिस दैट पंजाबीज एंड होल ऑफ पाकिस्तान feudal thinking is based on that kind of a thing. So Ayub was in a bit of a slightly belligerent sort of a thing, but Ayub was a military coward, don't forget that. And he was not the military chief, Musa was the military chief. Now biggest mistake that जो हुआ उस टाइम, अयूब खान ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी कि जब उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, वो वैसे ही जीतने वाले थे, उनको कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन फतेमा जिन्ना खड़ी हो गई उनके अगेंस्ट, जो जिन्ना साहब की बहन थी। ये डर गए। इन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिशियन थे वहां के, जुल्फिकार अली भुट्टो, जो अपकमिंग राइजिंग चैप, उसको उसको चाबी पकड़ा दी कि आप ये इलेक्शन मेरे को जिता दो, तो उसने जाके रिग कर दिया। Not only did he rig the election, it gave him unprecedented amount of power over Ayub Khan. And he was appointed the foreign minister at that time. So you have now a very strange situation. You got Ayub Khan, who was actually a bit of a restraining thing in Pakistan. उनके एयर चीफ भी नूर खान वगैरह, नूर खान तो बाद में आए, अक्सर खान थे, वो भी थोड़े रिस्ट्रेनिंग टाइप थे, लेकिन मूसा भी रिस्ट्रेनिंग टाइप थे, लेकिन यू हैड दिस एब्सोल्यूट वाइल्ड कार्ड इन जुल्फिकार अली भुट्टो. Now 2 or 3 other things have happened at that time before even the Ran of Kutch incident, which are important to note. Let's go back to Bhutto. And again, let's go back to the mindset. Bhutto's father had been the Prime Minister of Junagadh. ठीक है, और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि जुनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अब हम लोगों को ये मालूम है कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये सब पहले जॉइंट ऑपरेशन, हमने ऑपरेशन पोलो हुआ था हैदराबाद में, गोवा में, लेकिन बहुत कम इंडियंस को मालूम है कि काठियावाड़ में भी हमारी लैंडिंग्स हुई थी एम्फीबियस. we had used landing ship craft etc, and Indian Army की पूरी यूनिट वहां पे जूनागढ़ में उतरी थी. इट हैज अ फुल फ्लेजेड लैंडिंग, उसमें कोई फाइटिंग वाइटिंग नहीं हुई, लेकिन लैंडिंग तो थी. अब ये भुट्टो जी के दिमाग में ये बैठा हुआ था. अब 64 में विक्रांत हैड ऑलरेडी कम. विक्रांत हैड अराइव्ड इन 61 या 62 गोवा ऑपरेशंस के बाद. 62 में आ गई थी. लोग कहते हैं कि नेवी का कोई रोल नहीं था 65 में, लेकिन मेरा कहना है, और मैंने किताब में भी जिक्र किया हुआ है, कि नेवी से ही लड़ाई शुरू हुई है. क्योंकि यहाँ वहां क्या हुआ कि हमने जाके एक पूरी वहां पे एक्सरसाइज की है, वो काठियावाड़ एरिया में, गल्फ ऑफ कैम्बे वगैरह, और वहां पे विक्रांत वाज देयर, वर्कड अप फुली. सी हॉक्स वर फ्लाइंग, अलीजेस वर फ्लाइंग. ये जितना भी रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है, अच्छा, नो, पाकिस्तान का मेन एयर डिफेंस सिस्टम वाज बेस्ड एट बादिन. बादिन कहाँ पे? हैदराबाद पे. उनका हैदराबाद, जो कराची से 1.5 घंटे का रास्ता है बाय रोड. And all our aircraft were flying. The Alize had the capability of taking down the signals and everything, and the Pakistanis would have known that.
उसके ऊपर आपने अपनी 50 पैरा ब्रिगेड को भी स्टैंड बाय पे लगाया हुआ था फॉर दिस एक्सरसाइज. विक्रांत वाज डूइंग लैंडिंग. we've done some LST landings in ये रन ऑफ कच्छ सर क्रीक के आसपास. तो पाकिस्तान की अगर अगर मैं कोई पाकिस्तानी कमांडर होता तो मेरी तो हवा बंद होती कि ये कर क्या रहे हैं, चाइना से पिटे अब हमको मारने वाले हैं. और दे वर प्रोबेबली लुकिंग एट अ amphibious landing at Karachi. It's a reality. Because if you're a Pakistani commander, you'd be an idiot not to think like that. So what did they do? They looked at the Ran of Kutch from a three-pronged point of view. उन्होंने कहा कि हमको सबसे पहले एक स्पॉइलिंग एक्शन करना पड़ेगा, इधर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. ये तो अगर ये आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी. रन ऑफ कच्छ का जो कंट्रोवर्सी थी वो भी अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है जी. जो आपका ये कच्छ का जो पूरा एरिया था, ये रन का जो एरिया है उसमें उसका विड्थ करीबन 100 किलोमीटर के करीबन है. और ये जाता है बिल्कुल कंजरकोट तक. कंजरकोट से जो जमीन है ना वो पूरी बदल जाती है. हमारी साइड में पूरा स्वैम्प है. वहां पे स्वैम्प मतलब वहां पे सारा पानी आ जाता है. कहते हैं ये पुराना इंडस का डेल्टा होता था ये वो. उसमें सारा पानी आ जाता है और मॉनसून में तो बिल्कुल ही इट्स नॉट वेरी डीप. ठीक है, बट इट्स सलाइन वाटर एंड इट्स देयर. और उसके थोड़े से जो आइलैंड्स बनते हैं उनको कहते हैं बेट्स. तो उसमें सारी वाइल्ड लाइफ सांप बिच्छू सब उसी पे आके बैठ जाएंगे और दे हैंगिंग ऑन टू लाइफ फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम. Now the Pakistani point, diplomatic position on this Ran of Kutch was कि they said कि देखो ये डेड सी है, which is it's acknowledged as a dead sea. मैप पे भी used to show कि ये फ्लड हो जाता है ये वो. They said इसमें मैरिटाइम लॉ शुड अप्लाई. मैरिटाइम लॉ में क्या होता है, अगर आपके जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पाक स्टेट्स हैं जो वो जो है, आप उसके द लाइन गोज थ्रू द सेंटर. So they said we want the same line drawn. Therefore half of Ran of Kutch is ours, half is yours. हमने कहा नहीं देते. आई मीन इट वाजंट डिस्कस लाइक दैट, बट दैट्स हाउ ये बाद में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे गया है जहाँ पे उनको इन्होंने क्लेम वेम किए थे. तो जब एक तो ये पॉइंट था कि यहाँ पे स्पॉइलिंग एक्शन करते हैं इसको जाके, क्योंकि यहाँ पे सारा एडवांटेज हमारी तरफ है, क्योंकि जो हार्ड ग्राउंड उनकी तरफ है कंजरकोट के आगे, वो सिंध का इलाका जो है हार्ड ग्राउंड. वहां पे आप टैंक्स चलाओ, आप वहाँ आर्टिलरी लगाओ, कुछ भी करिए. कोई जो इंडियंस है इनकी तो वैसी बैंड बजेगी क्योंकि इनको भुज और उस साइड से आना पड़ेगा. एंड दे हैव टू नेगोशिएट द स्वैम्प. और जाके आप दलदल में लड़ाई करिए. तो यू आर होल्डिंग ऑल द कार्ड्स. So it will be a huge diplomatic win for us. Musa went along with the plan. Musa was the Pakistani commander. They had put Yahya Khan was the GOC in Karachi at that time. And Musa went along with the plan because वो ही वो उसको आग लगी हुई थी क्योंकि जो 56 में जब इनका इक्विपमेंट बदल गया था, अमेरिकन इक्विपमेंट आ गया था, पैटर्न टैंक्स आ गए थे, सेबर्स आ गए थे, स्टार फाइटर्स आ गए थे, आर्टिलरी आ गई थी. इतनी इतनी ज्यादा आर्टिलरी आ गई थी कि इनका पूरा माहौल बदल गया था. लोग 65 में कहते हैं पैटर्न से डेफनीज थी, ये था, वो सब आप एक साइड में डाल दीजिए. दैट हैड अ मिनिमल इम्पैक्ट. The real impact was the artillery. And the whole doctrines had changed because now the British doctrine was infantry attacking ये वो जो हमारी थी. इनके पास टैंक्स के साथ APCs भी आ गए थे. Their infantry wasn't supposed to close in. They were dying to test these doctrines out. Exercise एक चीज होती है, लेकिन दुश्मन के साथ एक और चीज होती है. तो जो पहला जो क्लैश हुआ था वो literally happened inadvertently. There was a Gujarat police was handling the this border along with the CRPF का एक छोटी सी टुकड़ी थी वहां पे जो सदार पोस्ट को होल्ड करती थी. और वहां पे 19 ग्रेनेडियर्स की एक पलटन थी थोड़ा पीछे की तरफ. ठीक है, और वो भी कैमल बेस्ड यूनिट थी उस टाइम वहां पे. आई मीन कैमल्स, इनफैक्ट द फर्स्ट कैजुअलिटीज इन 65 वो 3 इंडियन कैमल्स. पाकिस्तानी LMG फायर ने उनको 3 कैमल्स को मारा है. उनके ऊपर अभी एक वो बनाना चाहिए वहां पे, वो कैमल्स का कोई रिसर्च करके नाम निकाले. पैक एनिमल्स हैव बीन द, whether it is 62 or whether it's been World War II, whatever, have been a very major part of the Indian Army. Anyway, so that was the second thing. They were wanting to try this whole thing out. And when they launched the attack initially, everything was in their favor. So apart from 19 grenadiers, which was sitting slightly behind, and one Mahar, which was being commanded by Sundarji at that time,
देयर वाज नथिंग देयर. जो ब्रिगेड थी वो ब्रिगेडियर ब्रांच पे करके थे. He actually had very little resources and he was up against patterns and God knows what also. इन जब इनका पहला अटैक आया है सदार पोस्ट पे, वहां पे 12 या 13 या 14 या 20 आदमी थे सीआरपीएफ के. ये थॉट कि ये तो धोती वाले हैं, भागेंगे, क्योंकि 62 से ये दूसरा प्रोपेगेंडा था ना कि ऑल वी नीड टू डू इज शो अप, द इंडियंस विल रन. व्हाट डू दे कॉल अस? बुजदिल है ये, तो बुजदिल है ये, तो भाग जाएंगे हैं. तो जब ये बुज़दिल बनिए। हाँ, तो जब ये पहुंचे हैं वहां पे सदार पोस्ट पे, a brigade strength attack on Sadar post was repulsed by the CRPF boys. They stood their ground and they fought. उसमें 10 9 10 11 मारे गए थे. I don't have the figures off the top of my head, but those chaps, they stood their ground and they fought it out. और फिर वो रन ऑफ कच्छ का पूरा ड्रामा शुरू हो गया, ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू. उसके बाद ये हुआ वो. फिर who were the people who intervened? Guess who? The British. Harold Wilson comes in and all the bloody nonsense starts again. सीजफायर, ये वो, इंटरनेशनल कोर्ट, ये वो. सो ये जो अंग्रेजों का जो ये चाल थी, ये इनकी उंगली तो 62 के बाद तो जो पपेटियर की फिंगर्स नहीं होती जो सबको नचा रहा होता, तो अंग्रेजों की तो फिंगर्स आर लाइक बटरफ्लाईज. उनका तो हर एक चीज में दाखिल था. You actually, as a historian, after a while you feel stupid by saying कि अरे यार this was because of the British, अरे यार this was because of the British, but actually the reality is that everything was because of them. They were calling the shots. And they've actually pushed you into the 65 conflict in the manner of speaking. तो ये था इसका बैकग्राउंड. और सबसे बड़ी दूसरी गलती जो मेरे हिसाब से जो इंडियन साइड में हुई है कि वो एक तो इसी जनरल चौधरी को जब इन्होंने अपॉइंट किया है, इट वाज अ स्टॉप गैप थिंग. नेहरू हैड एक्चुअली डिसाइडेड टू ऑफर द जॉब टू थोराट. तो थोराट आए, फिर वो फाइल वाइल का वो हल्ला वल्ला हुआ, तो उन्होंने उसको नहीं नहीं लिया. और इन्होंने क्या किया, जनरल चौधरी को बुला लिया. They were not looking at General Chaudhary as a chief. In fact, they did not give him his rank. You know, he came and जब उन्होंने assume command किया, he was a lieutenant general. And Chaudhary got very upset. He says, "I'm not going to take the job unless I'm given my rank." But the first few days he functioned as a lieutenant general. So it shows what the government's thinking was. The second point, of course, as we discussed in 62, चौहान साहब को बोला गया था कि देखिए, आपका एक ही एजेंडा है कि 62 में कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. क्योंकि किसी भी चीज पे आप देखोगे, जैसे अभी मैंने बोला है, हर एक चीज में ढक्कन उठा के देखो, अंग्रेज देखेंगे. 62 में आप जहां भी ढक्कन उठाओगे, रोड वुड लीड बैक टू नेहरू. नेहरू को हैज टू बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट. तो इन्होंने एक भी बंदा 62 में जो भागा था, जो नहीं भागा, जो लड़ा, किसी को कुछ नहीं किया. तो वो हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट भी किसने किसने इनिशिएट की है? इनिशिएटेड बाय, नॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Henderson Books Report not initiated by the government. Henderson Books Report was initiated by General Chaudhary because he was looking, even then, he was looking at Kaul as his main rival, and he was, because Nehru was still looking for ways to bring Kaul back as the chief. So there were lots of wheels within wheels within wheels of what was going on. I've covered all this in the book, yeah, in great detail. हाँ जी। कहीं न कहीं सर ऐसा लगता है कि पाकिस्तानीज़ न्यू अबाउट ऑल दिस स्टफ. उनको पता था ये कि आपस में लड़ रहे हैं, तो ज़रा दिस इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी. सर आपने कच्छ का ऑपरेशन बताया, वहाँ पर तो हमारी फौज लिटरली गेव आई थिंक अ सॉलिड सरप्राइज़ टू द पाकिस्तानीज़. और वहाँ पर एक आधी एयर बैटल भी हुई थी, इफ आई एम नॉट नहीं, मिस्टेकन. no air battle. I'll tell नहीं, you what ओके. happened. हुँ, एक तो पहले मैंने बोला ना कि हमारी 19 grenadiers और one Mahar. I may have my figures off because I wrote this book 3 years ago. So there may be an odd discrepancy in what I'm saying, but in terms of units and names of people. Now, what happened was that apart from 19 grenadiers, we had one Mahar, and then we pumped in a brigade there, a parachute brigade. Three para, 4 para, ये पहुंच गए थे वहां पे. And by the time the Pakistanis have actually launched their full-fledged attack, much after the Sadr post and all that, we had dug our defenses, and our RCL guns have taken on the Pakistani patterns, etc., and they have actually halted the Pakistani attacks.
दे थॉट कि उनके उनके उसका नाम ही देख लो, डेजर्ट हॉक 1, डेजर्ट हॉक 2, डेजर्ट हॉक 3, 3 अटैक्स 3 स्टेजेस में किया था इन्होंने, और तीनों में इनको रोक दिया गया. बट दे पेंटेड इट एज अ मेजर 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 विक्ट्री. जो एयरफोर्स का इसमें जो रोल था, इसमें you see the Americans, when they had given them the pattern tanks, they had given it with a stipulation that the pattern tanks cannot be used against India. Who were they supposed to be used against had not been specified either. So they had been given all this equipment with the thing कि इंडिया के अगेंस्ट आप यूज कर सकते, लेकिन वो और किसके अगेंस्ट यूज करने वाले थे. तो ये भारी चीज कोवर्टली कर रहे थे. And the tanks had come into our area. So we had launched 2 vampires from Jamnagar. उस टाइम भुज एयरफील्ड was not operative. And दो vampires हमने लॉन्च किए थे. एक थे स्क्वाड्रन लीडर बारबोसा or something. He went in and he went in an unarmed aircraft. Yeah. और वहां जाके उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स लिए हैं, ये टैंक्स वैंक्स दिए, और लाके हमने फिर अगले दिन छाप दिए. और अमेरिकन को भी दिखा दिए, सारी दुनिया को दिखा दी कि ये तो क्या बकवास कर रहे हैं, तो ये साले बिल्कुल घुसे हुए अंदर. इनफैक्ट जब मैंने अपनी सॉल्ट ऑफ द अर्थ एयरफोर्स फिल्म बनाई थी, हमने इसमें जस्ट एज एन असाइड वी हैड गॉन टू हिंदुस्तान टाइम्स एंड we printed that newspaper, we filmed it, the tanks coming in and the same photograph had been recreated, but we did that, and Hindustan Times actually ran the entire press for that. It was very interesting to, and very nice of them also. Just a small हाँ, shot. It was a 15-20 second thing, but still, that was the kind of effort we went into it. दिस इज द इंसिडेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट सर. दो वैम्पायर्स वाला इंसिडेंट. He got a VRC for that, या and I takes a lot of guts, to fly in completely unarmed. अनार्म्ड. And navigation, the visibility was almost zero. Your dad's from the Air Force, you know what I'm talking about. They had to go in low level. They were literally navigating on the seats of their pants, and they actually pinpointedly arrived over the pattern. This is a bit of a miracle, actually. Speaks very highly for the flying skill of the Air Force at द that time. स्किल. यस सर, देयर इज नो क्वेश्चन. सर, नाउ द फर्स्ट जो एक फर्स्ट राउंड ऑफ बैटल जो शुरू हुआ, उससे पहले थोड़ी-सी बैक एंड फोर्थ हो रही थी डिप्लोमैटिक चैनल्स के अंदर, क्योंकि कहीं न कहीं क्या हमको पूरी तरह पता था क्या होने वाला है हमारे साथ? See the way things have happened. Run of Kutch evolved. It happened. I don't इवॉल्व. think. राइट. And the Pakistanis had this master plan कि हम ये करेंगे, और फिर उन्होंने उसको ऐसा प्रोपेगेंडा कर दिया कि अरे हम तो जीत गए, ये हो गया, हिंदुस्तानी भाग गए. वो उन्होंने किया, but they became victims of that same propaganda. That's the important part. See, the sequence is very important, Adi. Run of Kutch, there's a immediate flare up on the other side in Kargil, where Brigadier Ghai was commanding 121 Brigade. Now that's a very interesting thing what happened there, but it was very localized. वो भी बड़ा लोकलाइज था. तो इन दोनों को आप एक साथ क्लब कर सकते हो, ठीक है. फिर वो ब्रिटिश हुँ. इन्वॉल्व हो गए, ये हो गए, वो सीज फायर हो गया, और हमने कारगिल में भी जो कैप्चर किया था वो भी वापस कर दिया इनको. पर ये कारगिल वाला इंसिडेंट भी उसी के साथ लिंक्ड है, ये जो रन ऑफ कच्छ का टाइमिंग वाइज, एंड ऑल्सो बिकॉज वी रिटेलिएटेड. द सेकंड थिंग दैट हैपेंस आफ्टर दैट इज ऑपरेशन अब्लेज, और यू कैन कॉल इट द थर्ड थिंग. हुँ. रन ऑफ कच्छ, Kargil, Operation Ablaze. Operation Ablaze was like Operation Parakram, where you had mobilized the entire army across the entire scale, Punjab, Rajasthan, हर एक जगह. अब ऑपरेशन ब्लेज में सारे प्लान्स बने हैं जो आपके सितंबर में बाद में काम आए. ऑल द अटैकिंग ऑन लाहौर, ये वो, उसका हम थोड़ी विल टॉक अबाउट ऑपरेशन ब्लेज में एग्जैक्टली हुआ क्या. हुँ. बट फर्स्ट लेट्स गेट द सीक्वेंस. सो ऑपरेशन अब्लेज इज योर थर्ड फेज. देन व्हाट हैपेंस? ऑपरेशन गिब्राल्टर, where Pakistan now takes the initiative again and sends in these various columns into Kashmir, because they were expecting a completely different ball game there. Again, Bhutto is the key here, but that's it. वो सब we'll come to it step by step. आपका चार ये हो गया. पांचवा वाला क्या होता है? The Indian retaliation in Kashmir. Because instead of fighting a defensive battle, Harbaksh Singh was a very offensive general. वो हर एक चीज में चढ़ गया. Or he made a huge, quite a few blunders, but he managed to take the fight to the enemy. In a boxing ring, अगर वो बंदा आपकी तरफ धार धार आप उसको रोकते रहो, आपको लगेगी sooner or later. But Harbaksh Singh was a natural counter puncher. So when he counter punched, and कहाँ गए?
ही वेंट फॉर हाजीपीर एंड ही वेंट फॉर किशनगंगा बल, दोनों, ये गुरेज वाला जो आप किशनगंगा वाला जो बल है, जब आपने वो कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान का ये पूरा का पूरा ऑपरेशन गिब्राल्टर का प्लान जो था ना, इट बिकेम क्रेजी। सडनली उनकी जितने भी आदमी थे, दे डिडंट नो हाउ टू गेट देम बैक। सो व्हाट डिड दे डू? They launched Operation Grand Slam, which was in the Cham Aknur sector. So that is your sixth phase of the fighting. All right. Now, after that, you have a seventh phase, which is when we attack on the 6th of September across the line of control in सियालकोट, the Lahore. No, no, no. लाहौर सियालकोट Sialkot सेक्टर। was the 7th. Oh, Sialkot did not. We did not attack on the 6th. We attacked one day later. अच्छा, ओके, And that Operation Nepal. और सियालकोट की कहानी अलग है, कंप्लीटली वो डिफरेंट। अलग है। इनफैक्ट तो यू हैव एक्चुअली, एंड उसमें आप इंडियन एयरफोर्स का भी अगर आप उसको अलग से फेज पे ले लीजिए, तो आपके पास 9 सेपरेट सेगमेंट्स हैं 65 के, व्हिच यू हैव टू डिस्कस, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन हैव द 10th वन, व्हिच इज ताशकंद, ताशकंद, एंड ईच वन ऑफ देम इज बाय इटसेल्फ अ स्टोरी व्हिच इज वर्थ गोइंग इनटू, बिकॉज़ हर एक में जो हुआ है, जैसे लाहौर का है, उसमें आपका, उसमें देरा बाबा नानक है, उसमें डोगराय है, उसमें बरकी है, उसमें असल उत्तर है, उसमें खेमकरन है, उसमें हर एक चीज है। और उसके अलावा एक और सेक्टर भी है, बाय द वे, 61 कैवलरी, ये सब लोग ये राजस्थान में बैठे हुए थे घोड़ों और लांसेस लेके, दे वर प्रोटेक्टिंग दैट एरिया। And there is yet another angle, actually, yet another phase if you want to do it. So actually, you land up with 12 sections. Is the actual fighting at Godra, beyond Godra Road and all that, which is towards Hyderabad from Barmer. So अगर ये पूरा का पूरा आप देखिए ना, तो 65 की लड़ाई जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 62 का तो हमारा एक हफ्ता, एक दिन यहाँ लड़ाई हुई, एक दिन यहाँ लड़ाई हुई, यहाँ का एक महीने में, 2 महीने में पूरी बात खत्म हो गई थी। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी से जो चीजें हुई हैं, और सीज फायर के बाद भी ऑफ हिल और ये जो जो हुआ है उस वाले एरिया में, ये 13-14 सेक्शन हो जाते हैं आपके। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट टाइमलाइन इन योर हेड, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इट haphazardly कि नहीं नहीं ये from here what happened to Kashmir, no, they are, you know, they are, it's 6-7 months में this whole thing is unfolded. It starts in April and it finishes in September. यही बात है सर, बिकॉज़ यू नो व्हेन यू लिसन टू द रेगुलर नैरेटिव, वो है कि हाँ जी, रन ऑफ कच्छ में हुआ, उसके बाद जिब्राल्टर लॉन्च हो गया, जिब्राल्टर खत्म हो गया, फिर ग्लैंड स्लैम लॉन्च हो गया, वहाँ पर थोड़ा प्रेशर था, तो भारत ने एक और फ्रंट खोल दिया, एंड दैट्स इट। दिस इज़ व्हाट इज़ रेगुलरली टोल्ड टू पीपल। पीपल जैसे आपने डिस्क्राइब करा है ऐसा कि कहीं न कहीं you've gone through the entire motion of the war, which is really, really amazing. But ये चीज़ किसी को बताई नहीं जाती है। But is there a reason that sir all this was not told to people? जैसे 71 में लोगों को बताया था कि क्या-क्या हुआ है। 62 में भी लोगों को पता है कहाँ-कहाँ पे लड़ाई हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। 65 में क्यों नहीं बता रहे थे लोगों को? 65 की जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है ना, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक, वेस्टर्न सनराइज, आई फाउंड कि किताबें हैं 65 पे, and quite a few were had the same title, ki, you know, fighting back from the ropes kind of a thing. That was the tone which we had adopted. Actually 65 has been completely hijacked at one level, if I may use that term. When you read, one of the key propaganda protagonists in this लड़ाई में जनरल हरबख्श सिंह है। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी, वॉर डिस्पैचेस, ठीक है। अब वॉर डिस्पैचेस में उन्होंने अपना पूरा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उन्होंने पॉइंट वाइज छोटे-छोटे पैराग्राफ्स में पूरा का पूरा उन्होंने, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड रेफरेंस पीस ऑफ वर्क। और जब आप वॉर डिस्पैचेस को देखते हैं और आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो 65 की जो रिपोर्ट है ना, you begin to realize कि both have been written in conjunction with each other. Both are relying on each other. One is quoting from one is quoting from the other. One is quoting from one is quoting from the other. So basically, the history is being written by one of the main protagonists of the war, which is General Harbakh Singh himself. And as I said, I have a lot of admiration for the man. I think he is a great person. लेकिन उन्होंने बहुत सारे ब्लंडर्स भी किए हैं, एंड जो ब्लंडर्स उन्होंने किए हैं ऑल्सो हैपेंड बिकॉज ही कुड नॉट सी आई टू आई विद जनरल चौधरी से, तो उनकी बिल्कुल ही नहीं बनती थी। और ऑपरेशन अब्लेज से ही ये पूरा ड्रामा शुरू हो गया था। ऑपरेशन अब्लेज में ही चौधरी ने जो ब्लंडर्स किए हैं बाय स्प्लिटिंग द आर्मी, कि एक अटैक जाएगा सियालकोट को, एक जाएगा लाहौर की तरफ, उसने ही रावी नदी बीच में से जा रही है, आपने दो फॉर्मेशंस को बिल्कुल
आइसोलेट कर दिया एक दूसरे से, दे कुड नॉट सपोर्ट ईच। तो ये सारी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिनारियो है, और इसमें 65 में the role played by individuals, their own chips on their shoulders, their own hang-ups, etc., have had a very, very major role to play. हर एक लड़ाई में होता है। आप 71 की जिक्र कर रहे हो, अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो आपके जो 2 कोर के कमांडर थे, जनरल रायना, he was not talking to the 33 कोर कमांडर। 33 कोर कमांडर was not talking to the 4 कोर कमांडर, which was Sagat Singh, who was not, nobody was talking to the 101 एरिया का जो बंदा था। फिर भी हमें किसी तरह से निकल गए। सो ये सब चीजें होती हैं, और इनको जब तक आप नहीं समझोगे, और इफ यू से कि नहीं नहीं एवरीथिंग वाज हंकी डोरी, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, इट्स नॉट द केस। वी मेड बिग ब्लंडर्स ओवर देयर, और उसकी जो बाद में जो किताबें वगैरह लिखी गई हैं, लगता है कि 65 पे बहुत ज्यादा मटेरियल है, लेकिन बिल्कुल नहीं। 65 हैड बीन इग्नोर्ड, और ये पाकिस्तानी प्रोपागेंडा कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, विक्ट्री डे 6th, ये क्या बकवास कर रहे हैं। 6th ऑफ सितंबर विक्ट्री डे, अगर इनका आइडिया ये विक्ट्री डे तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी पिटाई हो जाए और आप उसको विक्ट्री डे बना दो, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत, आई मीन, हाउ मच बेटर कैन इट गेट। बट बेसिकली वी हैव नॉट बीन, हमारा ये मिलिट्री हिस्ट्री की तरफ ध्यान ही नहीं था। वी हैड अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम यार। 62 65, ये पीरियड हमारी हिस्ट्री में, वी वर अ कंट्री सर्वाइविंग टू जस्ट ब्रीथ यार। खाना नहीं था लोगों के पास यार। 71 में जो फाइनली हमारी कुछ आइडेंटिटी निकली है, 71 के बाद, नहीं तो जब से अंग्रेज हमको छोड़ के गए हैं, पार्टीशन का जो ड्रामा हुआ है, और जो काइंड ऑफ मास किलिंग, टेकन 2 decades टू रिकवर फ्रॉम दैट, नॉट इजी। यही है सर, बिकॉज़ a lot of people just don't understand, ये this war was very complicated and it was not that 71 में फॉरेन पॉलिटिक्स हुई कि, लेकिन हमने थोड़ी-सी उसमें इंसुलेट कर रखा था, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप डील हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। इसमें वी फाउंड आवरसेल्व्स टू बी, यू नो यूके, जैसे आपने बताया, ब्रिटिशर्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। 68 तक तो ये ऑफिस लेके बैठे हुए थे सर इंटेलिजेंस का यहाँ पर। आपको मालूम तो है ये आदि, 65 में, डू यू नो हाउ मेनी कंट्रीज फॉट अगेंस्ट अस, फिजिकली फॉट अगेंस्ट अस? इंडोनेशिया, दे सेंट सम वॉरशिप्स, the Libyan Air Force sent a few squadrons. We had nobody on our side. Okay, the Americans were on the in the final analysis. Americans actually played a semi-neutral role in the 65 war, but it was all their equipment. China was openly with Pakistan. UK was with Pakistan. Who the hell was with us here? रशिया के साथ भी हमारे उस टाइम things were not that good, and yeah, it was a very major thing. But 65, and I say it with a lot of pride, is actually when we've actually shown who we really are. उसके पहले 62 में तो ऐसी पिटाई हुई थी, सब उठ के भागती है। नॉट द सोल्जर्स वर विलिंग टू फाइट, पर कोई लड़ने को। बट 65 में पहली बारी वी एक्चुअली स्टूड द ग्राउंड। एज आई सेड कि सबसे बड़ी बात, हम लोग पैटर्न्स की बात करते हैं, ये करते हैं, आर्टिलरी का जो क्वांटम पाकिस्तान के पास था, जब आपका जब भी आपके अटैक्स गए हैं, डोगराई में, चाहे बरकी में, या कहीं पे, तो इन्होंने तो बिल्कुल बरसात कर दी थी ऑफ आर्टिलरी फायर, एंड आवर ट्रूप्स डिड नॉट ब्रेक अंडर दैट काइंड ऑफ थिंग आल्सो। इनका पूरा एचुगल कैनाल का डिफेंस सिस्टम वगैरह, ये बहुत समझने की बातें हैं, क्योंकि ये, और आपने बिगनिंग में बोला था इंटेलिजेंस, 65 में हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, जीरो। हमको ये नहीं मालूम था एचुगल कैनाल है कहाँ। एटलीस्ट द फॉर्मेशंस इन द ग्राउंड हैड नो आइडिया कि ये है किधर। वो जा रहे हैं, अब सबसे बड़ी बात यह है कि बरकी, जहाँ पे बाद में बड़ा झगड़ा हुआ टू गेट टू द थिंग, ऑफ कोर्स इट हैड टू डू ऑल काइंड। पहले दिन तो वो इचुगल कैनाल पहुंच ही गए, वहां जाके लाइफ बॉय साबुन से नहा धो के स्विम करके वापस भी आ गए, उनको पता ही नहीं था ये इचुगल कैनाल है। इट्स अ फैक्ट। जितनी ये भी बड़ी आपकी इंटरेस्ट एरियल थी, दे वर लाइंग विद चौधरी, दे हैड नॉट इवन कम डाउन टू द फॉर्मेशन यूनिट लेवल्स। लेवल्स। हुँ, यूनिट लेवल्स क्या, यही कोरेट के पास नहीं था। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सर, कि हमको कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे 65 में कि जिस तरह से हमारी पोज़ीशनिंग थी, वी डिडन्ट वांट टू प्ले द गेम, इफ आई मे से, द ग्लोबल गेम, द वर्ल्ड वाइड गेम,
कि यार दुनिया में एक गेम चल रही है, हम ज़रा थोड़ा-सा खेल लेते हैं इसको। अरे आई आप डोंट नो किस व्हाई दैट वाज़ आप एक नहीं, आई विल टेल यू व्हाई इट वाज। अभी ना वी सी अ वेरी डिफरेंट इंडिया। बाय डिफरेंट इंडिया आई डोंट मीन जियोपॉलिटिकल, वो भी वो है, बट अ वेरी डिफरेंट इंडिया बिकॉज़ I don't know exactly how old you are, but I remember I'm 63, right? I was born, I was 2 years old when the 62 war happened. वो साला ट्रांजिस्टर रेडियो जो होता था ना, that was your symbol of affluence. आपके पास ट्रांजिस्टर रेडियो है, वो आप कंधे पे रख के या तो क्रिकेट कमेंट्री सुनते थे या ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनते थे, और आकाश वो विविध भारती तो बाद में आया या पहले था पता नहीं, म्यूजिक आता था। These were the three binding factors and the radio. Nobody had a damn thing. यहाँ पे आई रिमेम्बर एज अ किड कुछ नहीं था यार, इट वाज लाइक लोग भूखे मर रहे थे। I mean, the governments that in those days they had their hands full just making sure कि आपके लोगों को खाना पीना पहुंच जाए यार। नॉर्थ ईस्ट का तो जिक्र ही नहीं होता था, किसी को मालूम ही नहीं था कि है कहाँ। ये साउथ इंडिया वाज लुक्ड एट एज सम गॉड अलोन नो सम द्रविडियन थिंग, और साउथ ऑफ इंडिया भगवान जाने क्या हो रहा होगा। किसी को इंडिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं था एक्चुअली, अगर मेरे से पूछो। वो नक्शे बनने लग गए थे जो स्कूल में आने लग गए थे कि नाउ फिल इन द गैप्स, कलर गुजरात, कलर महाराष्ट्र, कलर बिहार, एंड दैट्स हाउ वी बिगन टू लर्न कि वी आर वन कंट्री। हम अभी वी कैन से व्हाट वी वांट, बट इन 65 आफ्टर 62 अगर हमारी लीडरशिप का माइंडसेट ये था कि भाई लीव अस अलोन, हमको वी वांट इनफ प्रॉब्लम्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। You can, sir. I don't deny that fact, but it cost us quite a bit, as a matter of fact. But sir, 65 में how do you think the battle went on? कई बोलते हैं भाई जी ammunition ही खत्म हो गया था, कई बोलते हैं नहीं फिर यार तो ammunition was enough. We could have वो gone भी on for a long time. बाद में हुआ था वो, दैट वाज नॉट एन इशू इन द बिगिनिंग। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर व्हेन all our offenses had begun, Burki had fallen, and all our objectives around the Ichugal Canal, we had started getting there. We चौधरी was called by को शास्त्री जी ने बुलाया और उन्होंने कहा कि भैया जनरल साहब, अगर आपको मैं 5 दिन और देता हूँ, कैन यू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान की जो वॉर मेकिंग कैपेसिटी है, इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो क्या? ये सवाल उन्होंने इनसे पूछा है। और जनरल चौधरी की एक आदत थी जो बहुत खराब थी, वो किसी की नहीं सुनते थे, अपने स्टाफ की नहीं सुनते थे। वो अपना इसी बिफोर भी ही यूज्ड टू राइट अ कॉलम नोन एज मुचो, ऑपरेशन पोलो ही कमांडेड, मेड श्योर कि पहली जीप में जा रहे हैं, सारी फोटोग्राफ्स उनके ऊपर होनी चाहिए, कैमरास उनके ऊपर होने चाहिए। ऑपरेशन विजय ही वाज द कमांडर। ऑपरेशन विजय मीनिंग ये आपका गोवा का लिबरेशन जो हुआ था। So here was a man who was a bit of a showman. He was very good at war games. For everybody who attended a war game used to say you can't even argue with him. Theoretically, he was very good. He used to write these deadly columns about what should be done, what should happen, etc. But tactically, he was an armored corps officer. He had issues over there also. I've seen his initial appreciation of what should be done for Goa, and it was based on उनको यही नहीं मालूम था कि यहाँ पे इतने वाटर ऑब्स्टिकल्स। तो वो तो उनको लकीली स्टाफ ने बोला कि सर क्या बात कर रहे हो आप, यू नो दे मैनेज टू चेंज थिंग्स अराउंड। बट व्हेन ही वाज आस्क्ड बाय शास्त्री कि डू यू नीड दोस एक्स्ट्रा 5 डेज, इन्होंने वहां जाके बोल दिया कि मेरी एम्यूनेशन खत्म हो गई। ही वाज टॉकिंग थ्रू हिज हैट। हमारी 13% एम्यूनेशन एक्सपेंड हुई थी, एंड प्योरली बाय कोइंसिडेंस पाकिस्तान वाज लेफ्ट विद 13% एम्यूनेशन। They had expended 87%, we had expended 13%. हमारी सारी ट्रेन वगैरह ना पहले इधर, हमारे को टाइम लगता है, हमारा जो लॉजिस्टिक मूवमेंट फ्रॉम द डेपो, पाकिस्तान का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके पास उतनी डेप्थ नहीं है ना। आप बॉर्डर से 7-8 किलोमीटर 12 किलोमीटर का तो लाहौर आ जाता है, उसके बाद रावी है, उसके बाद क्या है, उसके उस साइड में उनका वैसे भी ज्यादा डेप्थ नहीं है, विथ नहीं है। हमारे पास हमारे सारे डेपोज वगैरह पीछे थे, ऑल द ट्रेन्स वर बिगिनिंग टू लैंड अप विद द एमिनेशन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। We had enough ammunition to sort these guys out. Yeah. शास्त्री was also very clear about one thing. अब ये पाकिस्तानी जो जितने भी कमेंटेटर्स हैं वो बड़ा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि जनरल चौधरी ने एक दिन स्टेटमेंट किया था, कहते हैं they allege he made this statement that I will have breakfast in
Lahore club and I will have lunch in God knows where. पर ये कहते हैं कि हाँ 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 ये नहीं पहुंच पाए, इनका लंच किया. I don't think Lahore as a city was ever an objective. Shastri was very clear. No, he did not want civilian casualties. He didn't want Sialkot to fall. He did not want, but he said, you put pressure on these cities and then we'll see. Even Karachi, even your Canberra bombing flights, etc., they were over the harbour and all. They withheld the fire. Because they were not sure कि civilian ships है कि नहीं. So ये 65 में ये जनरल चौधरी का सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही था. वो उसके ऊपर इट्स गॉट फर्दर कंपाउंडेड क्योंकि जनरल हरबख्श ने उनके ऊपर वो भी आरोप लगाया हुआ है कि वांटेड टू फाइट ऑन द ब्यास, ये वो अमृतसर वाज बीइंग थ्रेटन्ड, ये वो. एक्चुअली देयर वर अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स रनिंग अराउंड हियर. वन कोर जो सियालकोट के ऊपर अटैक किया है वाज रेज्ड ड्यूरिंग द वॉर. या आई मीन उन्होंने हेडक्वार्टर बना दिया था, फिर 14 डिवीजन रेज हो रही है, 6 डिवीजन रेज हो रही है, वहीं आके पहली बार ही मिल रहे हो कि आप कौन हो, आप तो मेरे ब्रिगेड कमांडर हो. लड़ाई के बीच में ये बात हो रही है. So it was a very tough time, and luckily, I think it all worked out. Individual fighting in various areas was most of our units have come out looking pretty good. I mean, जाट्स को देखो डोगराई में, आप फोर्सिक को देखो बरकी में, और Madras units also at Barki. The Marathas between Barki and Khemkaran. Khemkaran में भी after the defensive battle we fought 4 grenadiers and the various units over there. उन्होंने उनको रोक तो लिया, लेकिन उसके बाद हमने जो लीड की है खेमकरण में, क्योंकि हरबख्श सिंह ने अगेन व्हाइट एंड ब्लैक वाला सिनारियो हो गया ना. आफ्टर हैविंग टेकन अ लॉट ऑफ वेरी पॉजिटिव डिसीजंस, ही नाउ सेड नो नो यू गो एंड यू रिकैप्चर खेमकरण. ही सेंट इन हिज ओन बटालियन. सब मारे गए क्योंकि वो सुनने को तैयार ही नहीं थे कि पाकिस्तानी अभी वहीं बैठे हुए, कहाँ गए अभी. So there are a lot of blunders. Yeah, there are a lot of blunders. And you see, you can't look at this war purely in terms of figures. अब आप एयरफोर्स का फिगर ले लीजिए. We lost 75 aircraft. They lost 22. But if you actually go into the details of the war in 65, उसको पाकिस्तान एयरफोर्स को फिजाया बोलते हैं. तो फिजाया का जो रोल था और जो हमारा रोल था, जो डॉग फाइट्स हुई हैं, the air-to-air combats, etc., where we have actually performed better than them. Both the Nat and the Hunter has outflown the Sabre to quite some extent. Where our casualties were so high were because we got caught napping at Kalaikunda. We got caught napping in इनकी जितनी भी रेड हुई, हमारे हवाई जहाज सब बाहर बिल्कुल नीटली पैक्ड अप पार्क्ड थे कि आइए मारिए. वही वही हुआ है. और फिर 65 में सबसे बड़ी एयरफोर्स की जो डॉग फाइट हुई है, जिसके ऊपर परमवीर चक्र देना चाहिए था, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता था जब तक जगन मोहन एंड चोपड़ा डिड नॉट डिग अप द फैक्ट्स ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड. द एल्फ्रेड कुक का जो one hunt, eventually one hunter, Mamgame was his wingman, but he was nowhere to be seen. He took on 3 sabers, यार. 2 तो गिरा दिए, तीसरे को without ammunition हुई. And damaged it. not only did he shoot them down, गलती से they had put practice ammunition in his guns. वो बॉल एमिनेशन होती है, इट्स नॉट एज इफेक्टिव. हाई एक्सप्लोजर होता तो साला 3 क्या 4 गिरा देता वो. हेलो कैरेक्टर है. और उसको इवेंचुअली लेफ्ट एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसको तंग करके भगा दिया यहाँ से. भगा दिया था. अब क्या आदमी है. The reason I asked this question, sir, is because ये जो बाद में confusion, जो miscommunication और ये सब बाहर निकली है, I wanted to actually know कितना impact इसका war पे हुआ था सर, हमारी war effort पे कितना impact हुआ था, क्योंकि आपने भी बताया there was confusion, not confusion, differences between the two generals. मैं ये ammunition का question क्यों पूछा is to trigger that particular point of the conversation because उसके बारे में कहीं बात नहीं करते हैं लोग. How do you think that kind of ये जो चीजें बाद में बाहर निकली, how I did they think impact the ground battle? the clash was more of a tactical one. Okay, now we go back to Operation Ablaze. जी, After your Run of Kutch incident happens, and we've taken some posts in Kargil. Now, जी, Operation Ablaze में एक तरफ आपके आर्मी चीफ हैं जनरल चौधरी,
एक तरफ हरबख्श सिंह है आपके आर्मी कमांडर, और आपके जो वहाँ के जो जीओसी हैं, जो 11 कोर के, वो हैं जनरल ढिलन. ओके, ही वाज अ इंजीनियर ऑफिसर बाय द वे. एंड यू हैव 15 division being commanded by Prasad. Uh, you've got 7 division by Sibal, 4 division by Gurbaksh Singh, and one independent armored brigade sitting up in डेरा बाबा नानक. ठीक है. अब जो एक्चुअल क्लैश जो हुआ है, और इसके ऊपर यू गॉट अर्जुन सिंह एज द एयर फोर्स चीफ, हु इज आल्सो एयर वाइस मार्शल, सॉरी एयर मार्शल, नॉट अ एयर एयर मार्शल. चीफ मार्शल. He's still 3 stars. The only 4-star man in this whole game is General Chaudhary. Also, keep in mind one fact. General Chaudhary is 10 years senior. 10 years senior to the air chief. 10 साल अंकल भतीजे वाला रिलेशनशिप है. और दूसरा, नेवल, बोथ सोनम नेवल वाला, एंड दे वर 10 years एंड 1 रैंक जूनियर. तो ये जब मुंह खोलते थे उनके सामने ज्यादा बोल नहीं सकते ना, बिकॉज यू नो हाउ इट इज इन द आर्म फोर्सेस. आप मेरे से 1 नंबर सीनियर हो जाओ, मैं आपके सर सर करता रहूंगा फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. नाउ the main clash took place because when they were planning this offensive against Lahore, Harbaksh Singh wanted to concentrate all his forces and go for Lahore. And he said everything else will automatically collapse. You don't have to take the city, but the moment it is threatened, you first have to get across the Ichugal Canal. Once you got Ichugal Canal had been built by our money with defenses for the Ichugal Canal का एक bank higher था, with pillboxes all along pointing down, so it was not going to be an easy obstacle, and we knew that. But what exactly was the Ichugal Canal? How was it designed, etc.? Very few people had any idea about it. Now, what General Chaudhary did at this stage was he said, no, I want to have a two-pronged attack. One will go for Lahore and the other will go for Sialkot. Now, when you are looking at the map of India, ना, उसमें जो रावी नदी का जो फ्लो है, जब रावी आती है पठानकोट के बाद, वो पूरा आपका बॉर्डर ही रावी के फ्लो के साथ साथ चलता है ना, कहीं राइट डाउन टिल, एंड देन इट कट्स ऑफ एंड देन इट गोज टुवर्ड्स लाहौर. आप फिर नीचे आते हो और वहां पे आपका ये हरिके वगैरह आ जाते हैं, जहाँ ब्यास और सतलज मिलती है. फिर वहां से सतलज का, और वो ये सारे डुआब्स बने हुए हैं ना. व्हाट इज अ डुआब? डुआब इज बेसिकली द स्पेस बिटवीन टू ट्रायंगल रिवर्स. टू रिवर्स, राइट. सो एक तरफ आपका रचना दोआब था, जो आपका चेनाब और रावी का ऊपर का हिस्सा हो गया, जिसपे रचना दोआब में आप रफली ये ले लीजिए, सियालकोट सेक्टर ले लीजिए. और आपका फिर बारी बारी दोआब हो गया, जो ब्यास और रावी का है, ठीक है, जिसमें आपका लाहौर आ जाता है. अब ये दोनों दोआब जो हैं, दे आर सेपरेटेड बाय द रावी. एंड जनरल चौधरी सेड ही एक्चुअली मूव्ड वन आर्मर्ड डिवीजन into the other, into the Rachna Doab, and he said ki you manage with what you've got over here and you go for it. So he split your forces into two. Rachna Doab में ये जो 1 कोर को वहां लेके आए हैं, उसको मे बी देयर वाज अ वेरी, इट्स नॉट कि उसमें कुछ नहीं था, वहां पे 26 डिवीजन पहले ही बैठी हुई थी, which by itself is quite a powerful division. 26 division is sitting between Aknoor and Pathankot. पठानकोट. It is your main strike division. My father actually commanded that division later. So you actually you can go for Sialkot in any case with 2016. So there was this whole business of, and ये जो इन्होंने 1 कोर का thrust उधर ये जो सियालकोट के लिए किया है, जो इसमें इन्होंने क्या किया, इट्स बेसिकली एन आर्मर्ड शो, कि इसमें 3 आर्मर्ड रेजिमेंट, 3 सेंचुरियन रेजिमेंट्स एक साथ, वन ऑन द लेफ्ट, वन ऑन द राइट, वन इन द सेंटर, हम जाएंगे एंड देयर विल बी नथिंग टू स्टॉप अस. But there the Pakistanis have fought well because उनकी 25 आर्मर्ड डिवीजन एक रेजिमेंट आ गई पैटर्न्स के साथ, और वो शुगर केन में काफी गदर वदर हुई. So they found the going very difficult. Rajendra Sparrow was commanding that one armored division, and there was a lot of confusion. And उनको दो support divisions जो आपने दी हैं, 6 mountain div and 14 division, वो रेज हो रही थी. 14 तो रेज हो रही थी, 6 तो पहले की थी. But you know, there was absolute chaos, and आप अपनी पूरी formations को आपने split कर दिया. तो जो main clash हुआ था generals का, इसके ऊपर हुआ था. Harbaksh said, no, I want to go like this. This guy said, no, I'm your senior officer, I'm telling you to go like this.
और उसी के कारण उन्होंने बाद में ये जो फॉल बैक ऑन द ब्यास वाला जो ड्रामा हुआ है, जो जनरल हरबख्श क्लेम्स की मुझे इन्होंने रात को फोन किया, ये वो, इट इज ऑल रिलेटेड टू दिस ईगो हैसल्स व्हिच हैड हैपेंड एट दैट टाइम. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट्स व्हाट इट वाज. तो सर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट आफ्टर दिस? क्योंकि अभी कहीं न कहीं जिब्राल्टर आ गया, कारगिल के ऑपरेशन के बाद ये सब स्टार्ट हुआ एंड जिब्राल्टर का स्टोरी हमको पता ही है, उसके बाद द ग्रैंड स्लैम केम इन अखनूर छमजोरियां के बीच में काफ़ी प्रेशर आया था उस टाइम पे, तो ये 2 बैटल्स को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? और इसके अंदर कहीं न कहीं व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट अ, हमारा जो एक हमारी तरफ से एक जो रिएक्शन आया था सर, इन दोनों जगहों के अंदर, आपका उसमें क्या व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दैट? Jammu and Kashmir was under 15 core, जी, right? टिल And वेरी रिसेंटली आल्सो। yeah, I mean 15 core is based in Srinagar even now. जी, Now they were basically handling the entire Jammu and Kashmir sector, 15 core, and General Kashmir Katoch was the core commander for 15 core. 15 कोर का जो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो इसका ये ऑपरेशन गिब्राल्टर का जो स्टोरी है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि भुट्टो visited China, and he was Mao spent quite a lot of time with him and told him, देखो, we've done this to the Indians in Nepal, we've done this to them in Ladakh, तुम एक काम करो, तुम जाके कश्मीर में you go for a guerrilla type operation. You have these columns, you do this, you do this, you do this. वो broadly उसने उसको जो भी बताया उसने बता दिया. Bhutto got very fired up and he came back and he went to Ayub Khan and said, listen, I've got a master plan which the Chinese have told me ऐसे करो. And Ayub, I told you, was a military back him. He told him कि sorry, I mean, what guarantee is there that we'll actually be able to pull it off? इसके पहले वो उन्होंने वो profit share का वो कुछ हुआ था. They were constantly trying to destabilize the situation in the valley, which they've been doing for years after that also. या, So there was a lot of uncertainty around that whole thing. There are other issues also at play here. The 12th division was being commanded by 11, yeah, 12 division by this General Malik, and he was the one. He was the man who was. He had unlimited amount of weapons, which had become free when the American equipment had come in for the Pakistan army in 56. They had sent in all kinds of new equipment. अब ये जितनी भी इनके पास जो British rifles and LMGs और mortars और ये सब था, he could equip an entire army on his own. India became a propaganda. We became victims of our own propaganda here, because later on, after the war, we kept insisting that 30,000 raiders had come into Kashmir. In fact, in my book, I've argued that it could not have been more than 8 to 12,000. But 8 to 12,000 is a hell of a figure, यार. ये या, 30,000 को they could not have sustained. पर हम इन चीजों में मार खा गए, इन्हीं की इसी की डिस्कस करते करते कि ये हो गया. वो थोड़ा सा उन्होंने बड़ा चढ़ा के उन्होंने our own failures we try to cover up by exaggerating what the enemy had done. They went ahead, they equipped all these guys, they made all these columns, and these columns were like full infantry regiments here, with radio sets, uniforms, enough rations, and they were banking on the local population supporting them. So one column went for Kargil, one column goes in for Gurez, one column goes for Srinagar, one column goes this way, and even they even cut you even close to the IB. यहाँ तक कि सांबा के आसपास भी इन्होंने एक कॉलम भेजी सांबा। थी. तो ऐसा it became, before we knew it, first reports came from Gulmarg when some Bakarwals and all that came and said कि भैया ये तो ये कोई किसी किस्म की वर्दी पहनी हुई है, सलवार कमीज हरी हुई, belts भी हैं, ये है. So we started to get to know about that. But initially we took quite a hammering because all our units were were attacked by these people. In fact, I think one of the Kumaon battalions lost their CO. They were relentless. Luckily for us, जो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी ना कश्मीर की, उस टाइम पाकिस्तान के साथ नहीं गई. They did not support these chaps. Maybe they did not necessarily support the Indian army also, but they were not giving shelter to these people. And it gave us a little bit of time to sort of try and realign. We pushed in one brigade from here. We airlifted troops from Ambala. We did this, and Harbakh Singh and Katoch were running around like anything.
In between all this, Harbakh Singh decides to tell the 19 Div. 19 Div was the only division we had which is actually holding the Baramulla sector. He says, you go for Hajipir. Hajipir काट दो तो ये साले वापस नहीं जा सकते, और जब ये वापस नहीं जा सकते तब इनकी नानी याद आ जाएगी. So in what actually was a major, Brigadier Bakshi was the brigade commander, Zoru Bakshi, one of the finest officers we've had. These people said, let's go, yeah. And one para वगैरह का, it was actually, there was no major fighting involved in the beginning. It was more a case of endurance. One para under yeah, Ranjit Singh Dayal and all, they got to the thing. By the time the Pakistanis realized हुआ क्या है and counter attacked and all that, फिर हम बैठे हुए थे वहाँ पे. So we actually fought them all. And suddenly the whole game changed, because अगर आपका पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है ना, चाहे आप कितने भी और आपको आगे से सपोर्ट नहीं मिल रहा, पीछे आप जा नहीं सकते. उसके बाद तो चुन-चुन के मारा ना हम लोगों ने इनको. We sussed them down and we bloody hunted them, and the local population was fantastic. We had everything going for us in 65 in Kashmir, in that front. But once we took Hajipir, and we also took the Kishan Ganga Bal. Kishan Ganga Bal is वो आपका वो ये गुरेज वाला जो सेक्टर है. That is actually linked to Ladakh also, in a manner of speaking, क्योंकि रोजेला से अगर आप नहीं जाओ तो अगर इधर से जाओ तो फिर राजस्थान पास से होकर अंदर आना पड़ता है. तो ये दोनों हमने इनके दरवाजे बंद कर दिए. तो Malik ji now was under a lot of pressure. So what did he do? They took out 2 armored regiments and decided to go into the area north of the Chenab, which is your Akhnur wala, Cham, Joriya, Akhnur wala sector. और वो आईबी के अंडर आता था, और उसमें हम गलतफहमी में बैठे हुए थे कि क्योंकि आईबी है, ये यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे. वहाँ पे जो ब्रिगेड बैठी हुई थी 191, उनके ब्रिगेड कमांडर मारे गए. जनरल ब्रिगेडियर मास्टर वाज किल्ड इन शेलिंग. एंड जो वहाँ पे ट्रूप्स बैठे हुए थे, वो घड़ी-घड़ी कह रहे हैं कि इनके टैंक्स आ रहे हैं, इनकी आवाजें आ रही हैं, इनका ये हो रहा है. और 15 कोर कह रहा है आपको सपने आ रहे हैं. They refused to give them mines, they refused to give them ammunition. And when the attack came, it was Punjab police, which was armed police, which was holding those posts, not the army. एक पलटन थी वहाँ पे 6 सिखलाई, और you know the general chaos. But वो जो when the Pakistanis started attacking on that narrow belt, 20 Lancers put up a very good fight. Some units put up a very good, and we managed to slow them down. वो भी वही बात कर रहे थे ना कि breakfast at Cham, lunch at Joria, and dinner at bloody Akhnur. They never got beyond that. And then they made another big blunder. On the first day, they replaced General Malik with Yahya Khan. Why they did that? There's a lot of speculation on that. But Yahya Khan अपनी मिस्ट्रेस को लेके आया था वहाँ पे. I've been to that guest house where he broke the bed with her. So वो शुक्र है मिस्ट्रेस के ऊपर ही उसने जो करना था कर दिया. हम बच गए उस चक्कर में. But the fighting over there was very grim, yeah. But we managed to pull back. So there again, क्या हुआ पहले दिन? Air Force was asked to come in. We sent in vampires. उनमें से 3, there were 3 layers of 444, 12 aircraft attack. The first lot, the second lot were bounced by Pakistani sabers. Vampire versus sabers was no contest. Yeah, they shot down 3. Rafiki करके कोई उनका एक fighter pilot था, उसने 2 मार दिए. And a third one also went down. By the time the missiles came, they didn't know where the bomb line was. So we actually landed up shooting some of our own, bombing some of our own targets. So there was a lot of initial chaos. But then after that, when the Air Force got into the act by the 3rd, 4th of September, जब वो पहली dogfights हुई हैं, Pathania and Keeler, and ये वो Keeler का तो he was credited, Trevor was credited with the first kill, but actually that guy had got back to Pakistan. It's and then of course, you know, the Nebs and the Thandus and the Killer भी दोनों भाई हैं ऐसे, both the brothers. I mean, one guy takes out one, the next day another guy takes out one. यार ये. Angel was our neighbor, you know. In fact, my dad did the NDC course. We were in D block in Raksha Bhavan. We were above and he was below. And such a wonderful guy. At that time, the Mirages had just come in. In fact, I am alive thanks to him, because when the Bhopal gas tragedy happened, my flight went via Gwalior. And he had taken over Gwalior Air Base after having done the NDC course. And मैंने हिंदुस्तानी में लिखा है इसके बारे में. When the aircraft landed at Gwalior, he came to see me, so I came down the steps and he told me, तुम जा रहे हो भोपाल,
चाहे कुछ भी करो, एक गीला कपड़ा लगा के नाक पे रखना, नहीं रखोगे तो सुनने में आया कि दैट इज द ओनली वे यू कैन एक्चुअली सर्वाइव द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द गैस. एंड व्हेन आई गॉट देयर, द ब्रिगेड कमांडर इन भोपाल was had been my dad's deputy in Kyari in Ladakh, and he went with me. But उन्होंने कपड़ा नहीं, उनके मैं हाथ में गीला कपड़ा पकड़ाया हुआ था, उन्होंने नहीं लगाया, मैंने लगाया था, and he died, you know. Aye. So it was quite a, yeah, these things have all been quite a, I've written about that also in Hindustani, it's all there. So a lot of things we are talking about, I mean everything has been written about, so it's 65 का किसी को really understand करना है तो actually that book that I've written, it's taken a No, hell of a lot of effort. I'm gonna put the link there in the description, sir. So, sir, now we're at a point of time the Punjab front is going to be activated. Barki, this entire area. So, ये decision कहाँ से हुआ? Is this because we wanted to do something else? We wanted to expand this thing. What would be your analysis on why was this particular decision taken, sir? We were very fortunate that we had a prime minister who had, well, there's only one word for it. He had balls. Kahunas. And, he, उनका तो शास्त्री जी के बारे में आप जितना कहो, it's not enough. उन्होंने आर्मी को सीधा बोल दिया कि अगर ये कश्मीर में आपको छेड़खानी करेंगे, आप राजस्थान और पंजाब का फ्रंट खोल दीजिए. मैं आपको पूरा परमिशन दे रहा हूँ, करिए जो करना चाहते हो. ओनली 2 या 3 चीजें उन्होंने कहा, आई डोंट वांट एनी मेजर सिविलियन कैजुअलिटीज. I mean, whether he said it or he implied it, I don't know, but he was very clear. And he said, "Ki you take them on your this thing. You don't worry about international opinion. You don't worry about anything. Fight it the way you want to, and you go for it." And Shastri, छोटे कद के होंगे, maybe a small, physically small, but he was a big-hearted guy. And he gave his army the kind of support which very few politicians have ever given you. They tend to interfere. He said, "Don't tell me anything. You just do what you have to do." And he left it to Chavan. And Chavan also was he'd been the chief minister of Maharashtra, and once in 65, Chavan's performance was very good. Both the defense ministers we had in 65 and in 71, Jagjeevan Rao, were considered by the armed forces to be very good, which is what matters. Baki log jo bole, it's irrelevant. So this sideways escalation. कौन सा वाला? No, not sideways escalation. That's a wrong word actually. The new front that we opened up. The moment we opened it, the Pakistanis didn't know what to do. Yeah, and in fact, in my book, I've talked about something else. If you really analyze the preemptive strike against us and Operation Grand Slam, जहाँ इन्होंने पुंछ में ये छम में किया है, मेरे हिसाब से तो इनका पहले से एक यही प्लान था, ग्रैंड स्लैम था, लेकिन ये इस सेक्टर में था ही नहीं. मेरे हिसाब से आई थिंक दे वर प्लानिंग टू एक्चुअली कम डाउन आपका फिरोजपुर वाला एक्सेस एंड कट यू फ्रॉम देयर, क्योंकि जब लड़ाई भी शुरू होगी, ये ब्रिगेड हैज स्टिल कंटिन्यूड टू डू दैट, एंड द पाकिस्तानी एनालिस्ट्स हैव नेवर टॉक्ड अबाउट दिस, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट, बिकॉज़ दे आर स्टिल होपिंग टू डू इट. आई थिंक दे फील कि इसको लेट्स नॉट गिव दिस प्लान अवे, बिकॉज़ ये जो ग्रैंड स्लैम का हुआ है, इट्स टू पैटिया. Overnight, Hajipir has happened. Suddenly, you switch this whole to two divisions are moved from to one division is moved from here, and you go in and attack with armor and all that. They were planning to do that south of the Beas and ये सतलज का जो फजिल्का का जो एरिया है, क्योंकि जब लड़ाई छिड़ भी गई है ना, उनकी एक ब्रिगेड कमांडर ने फिर भी वो वाला प्लान इंप्लीमेंट किया था, पर वो उसके पास फिर सपोर्ट और फायर पावर नहीं. सबसे बड़ा फेलियर तो हमारी तरफ से एयरफोर्स का था, क्योंकि हमने ग्राउंड सपोर्ट के लिए पहले तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था. उनका एक स्क्वाड्रन यार, वन स्क्वाड्रन, वो भी अमृतसर के एसयू के नाक के नीचे, वो पूरा उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड में शॉट अप ऑल ब्लडी सप्लाईज एवरीथिंग. 3 डोगराई में 3 जाट और ये सारे बिल्कुल ऐसे बुरी तरह से फंस गए. एंड फॉर व्हाट? एंड द इंडियन एयरफोर्स, यू नो
Philip Rajkumar and all these guys who were in one squadron, they're telling me, we used to cry. We used to say, let us go. Order देना है, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो. And finally, when they were allowed to go, they were told, no, no, you can't do this, you can't do that. I mean, what kind of a war were we fighting? Arjun Singh had his own agreements with the Air Force. He told me himself when I was doing the history of the Air Force. He said, I had an agreement with Noor Khan that let the army and the Air Force will not get involved because it will take the level too high. एंड इट्स ओनली जब इन्होंने अमृतसर रेलवे स्टेशन और प्रिजन को बॉम्ब किया फिर मैंने कहा कि चलो जाओ अटैक करो. पाकिस्तान एयरफोर्स हैड नो सच कंपल्शन ना. उनके ग्राउंड सपोर्ट हवाई जहाज खट से आ जाते थे, हमारे कहीं नहीं दिखाई देते थे. नॉट बिकॉज वी डिडंट हैव देम. या हम स्टेयर्स एवरीथिंग वेटिंग वेटिंग वेटिंग. ये जो माइंडसेट था ना ऑफ नॉट इन्वॉल्विंग द एयरफोर्स टिल जैसे छम में हुआ फिर लास्ट मिनट में आप भाग रहे हो और वहां पे गदर हो रही है. यू यू नीड इट. ये ज्वाइंट सर्विसेज का अभी भी सबसे बड़ी वीकनेस मेरे हिसाब से यही है कि आवर टर्फ वॉर्स आर टू हाई. अभी भी हम अपना ही बैंड बजा रहे रहते हैं. दैट इज ट्रू सर. सर लेकिन ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात बताया एयरफोर्स के बारे में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शन 62 के बाद भी हमारी नहीं निकली दिमाग से कि यार एयरफोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको जरा यू नो 71 में जाके हमको थोड़ा अकल आई है where we've used the Air Force effectively, but even in East Pakistan, let me tell you, the way Pakistan Air Force was bloody flying around till the 5th of December. You can say what you bloody well like, Air Force का है कि हमने इनको 24 घंटे में न्यूट्रलाइज कर दिया. ये वो एक उनका स्क्वाड्रन था वहां पे. I know, yeah, because हमारे पे अटैक आया था in Agartala. I was with my dad's battalion. We 18 Rajput got strapped on the 5th of December by sabers. जो एक हमारा एक the chap who used to be my dad's buddy, Devi Singh, he got shot. 30 mm cannon went through his chest. उसको फिर उठा के how they took him to the hospital and saved his life is another story. But Pakistan Air Force has always been very spunky, okay. And the Fizaya has always, with limited resources, put up quite a good fight. Let's give the enemy his due when you have to. They have not had we've always had the superiority because, you see, our entire fighting, we require time. So what was the problem with Chaudhary and the whole 65 operation? And to a great extent, let me tell you, this is also applicable to 71. We tend to fight a war of attrition. 71 में तो पूरी कहानी बदल गई ना because of what happened at Ashuganj and what happened at this, that and the other, and suddenly the gates opened. It was not the plan. Even General Maneshaw had no intention of going for Dhaka, let me tell you. Yeah. It is That to JFR Jacob has said it very clearly, sir. Yeah, it's the Battle of Ashuganj where they have taken one of their brigades and sent them up to Sylhet, and they've created a gap. Sagat Singh's Battle of Ashuganj was fought by 18 Rajput. Yeah. The bridge has gone up with Major T.L. Sharma was one of my dad's company commanders. I mean, the whole battle was fought. The entire thing happened in a certain manner. Correct. I don't want to talk about that because it's my father's unit was involved and they were at the forefront. So I don't want to sound as if I'm beating their drum. But the fact is, the Bangladesh government, everybody acknowledges that is what opened up the gates to Dhaka. So anyway, let's see. Yeah. A lot of things which happened in 65, 71, which really need to come out. And the problem with most of our people is that a lot of other things come into play. When they finally start speaking about it also and they start writing about it, there's already kind of predetermined कि मैंने इसको highlight करना है, इसको down करना है. History is not written like that. Yeah. History has to be looked at very objectively. ये मेरा Comprehensively and मेरा मामा था, ये मेरा अंकल था, वो वाली हिस्ट्री नहीं चलेगी. और मैं तो सर आई एम वेटिंग कोई मेरे साथ ये करे कि we could literally go battle by battle and do half an hour 20 minute half an hour series on this कि ये battle इस तरफ ये battle इस तरफ. Obviously it won't be like those hit crazy series, but at least they will be documented videos where people are talking about यार ये battle में ये इस दिन शुरू हुई, इसमें day 1 day 2 day 3 day 4 ये हुआ और ये यहाँ पर आके खत्म हुई. तो उससे क्या होगा, एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक 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 कंटिन्यूएशन बनेगा सर.
देखो, एक चीज़ है, मेरे को कई लोग पूछते हैं कि आपने ये किताबें लिखी हैं, कितना टाइम रिसर्च में, कितने लोगों से बात की है वो। After a while, let me tell you, it's a problem talking to people. Yeah. I'll give you one example. I won't name the individuals, but uh, Khemkaran ki battle le lo. I was talking to जी। one armored officer who was one of the squadron commanders. अब वो उसने अपने पर्सपेक्टिव से इतनी लंबी चौड़ी 6 घंटे को मेरे को बैठ के पता नहीं कितनी कॉफी पिलाई, और ये वो उसका बस चलता तो आई वुड हैव बीन देयर फॉर द नेक्स्ट fortnight also. Minute detail कि I did this, I did this, I did this. But according to him, he had won the war single-handedly. ये वैदिया इज एन इडियट, दिस वन इज एन इडियट, दिस इज बाकी सब इडियट, मैं खड़ा हुआ वहां पे. But in the long run, in the final analysis, you got to be able to, as a military historian, you have to be able to weed out what actually happened. And when जी। a person is talking to you, वो सच बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है. वो अपने परसेप्शन से बता रहा है आपको, क्योंकि वो इतना हाइटेंड हो जाता है लड़ाई में, उसको लगता है कि मैं ही हूँ हर एक चीज. अब ये जो प्रॉब्लम है, जितने भी किताबें वगैरह लिखी गई हैं बाय पीपल हु बीन टॉकिंग अबाउट इट, उनकी दो दो चीजें आर एट द फोरफ्रंट. कुछ भी हो जाए, मेरी पलटन की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए. So I am not going to say anything negative about my old unit. दूसरे भाग गए वो मैं बोल दूंगा, पर लेकिन हम भागे थे, हम उन्हीं कुछ बोलेंगे. So basically it's already colored. Secondly, and this has been a problem with Indian writers, most army officers have been brought up to believe that they are apolitical. Now they've taken it to a बिल्कुल ही एक और लेवल पे ले गए हैं कि हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे कमेंट नहीं करना चाहते. अरे भैया, आपकी फौज सिविल से कंट्रोल होती है, आपका पूरा actions are determined by the political scenario. आप उसको separate कैसे कर सकते हो? That is what I've tried to address in my books. You know, I've tried to tell the story and then join the उसके dots को डालो. Actually, 65 की किताब, not because I've written it or I'm trying to plug it. It actually needs, in my opinion, is a much better book than 62. क्योंकि I also learned from the mistakes of 60. 62 is a different kind of a book. It was a limited war, and it was a very, you know, it was a bad hammering. यहाँ पे 65 maybe I've tried to be as objective as possible, but even I'm bound to make mistakes. I mean, I'm not saying everything I'm saying is absolutely correct, but it should. I think I've tried to get as close to the truth as possible. So sir, now let's come to I mean, when did the realization come, especially on Pakistani side, कि भाई हो गया, कुछ है नहीं. उनके हाथ में क्या रह गया था? कुछ नहीं. They were at our mercy. And अगर चौधरी ने वो गलती नहीं करी होती, and had we destroyed their war making capacity, do you realize 3 million 71 Bengalis won't have happened. would not have died? जो इन्होंने बेरहमी से लोगों को मारा है बाद में, और जो आज बांग्लादेश की पूरी जनता भूल गई है, because nobody wants to talk about it, because of certain events having happened in a certain way after Sheikh Mujibur Rahman was assassinated. The whole history of Bangladesh got hijacked. Some of it has now come back a little bit, but the fact is that they have no clue. I mean, what Pakistan did, पाकिस्तान ने तो किया, लेकिन उनके जो रजाकार ने भी जो किया ना, रजाकार वो दे BSF type, I mean they paramilitary type of troops. Uh, they were basically East Pakistanis, Biharis and all that. They went berserk. आर्मी हैज वेरी लिटिल आइडिया अबाउट विलेजेस में कौन कहाँ है यार. वो ज्यादा जाके वो भी हमारी आर्मी के जैसे वो जाएंगे, फ्लैग मार्च करेंगे इधर उधर. दे वुड हैव किल्ड पीपल आल्सो, यस, बट द रियल ऑपरेशन सर्चलाइट वाज डन बाय द आर्मी ऑफ पाकिस्तान, सो दैट दे डिड इनफ डैमेज देयर. बट द रियल मर्डर्स इन द विलेजेस एंड एवरीथिंग वाज डन बाय द रजाकार. You know, that's the problem, sir, because कहीं ना कहीं लोगों को ना, स्पेशली बांग्लादेश, आई फील रियली सैड, क्योंकि ये उसी जगह पे जा रहे हैं when something that they fought with their dear life and they lost so many people and they're going in that same direction. तो आपने बोला सर कैपेसिटी खत्म होगी. How did the global geopolitics open out, and ताशकंद के बारे में, let's spend the last 10 minutes talking about that and then we can bring this discussion to a close. Tashkent, I think I flew to Bombay twice to talk to Pradhan, and my main intention was to try and get as much information as I could out of him. He told me that the night before Shastriji died, he was on the same floor, 2 or 3 rooms down from the Prime Minister. और उस दिन शाम को ये गए थे किसी कारण
उनके पास या वो he was in the room, Shastri ji had said he knew jolly well that by agreeing to return Haji Pir, it was not going to be a popular decision. उनको मालूम था कि इसमें मुझे बहुत वो होने वाला है, और उन्होंने ये बोला उनको, हाँ, he told Pradhan, whether he spoke to Pradhan or spoke to somebody, that I don't remember, but he said, मैं जिंदा वापस नहीं जा सकता. And he says that around 3 or 4 in the morning or something like that, or I don't remember the details now, somebody knocked on his door and said, looking absolutely सफेद हो गया था उनका मुंह, उन्होंने कहा जी शास्त्री जी तो खत्म हो गए. एंड शास्त्री जी को क्या प्रेशर्स थे, क्या पुल्स थे ब्रेजनेव के, ये सब उसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि the Americans are involved, the Russians are involved, the Pakistanis are Everybody is there. involved, everybody's involved Everybody. in that. So you, it's impossible to really tell what happened. But one thing is sure that, I mean, the only thing I know and I can comment on is this one comment which was made to me by Mr. Pradhan. I don't know what happened, but like a lot of, I don't think anybody has a very definitive answer on that. Exactly हुआ क्या ताशकंद में. लेकिन had we not returned Haji Pir and the Kishanganga belt to them, Yeah. क्या होता? आपके ये जितना भी आपका ये 80s और 90s में जो टेररिज्म का जो ड्रामा हुआ है, it would have been reduced by half, because these are your main infiltration routes and will continue to be the main infiltration routes no matter what you do. And giving it back even in principle is wrong. How are you claiming POK as being yours और साला वापस दे रहे हो उनको? तो ये सब चीजें हैं, हुई हैं, और अब क्या बोलो. But you see again, pulls and pressures are very different here. It's difficult for us to, what exactly was the pressures on Prime Minister Shastri, we don't know. And international pressure बहुत बढ़ रहा था उस टाइम पर, ठीक है. उसके बाद तो अयूब खान जी became one of his pallbearers and ये वो, but हमारे पे क्यों सर? Why on us? Why on us meaning what? I mean, we've discussed कि ये लोग पूरे गैंग अप हो रहे थे हमारे अगेंस्ट में, चाइना ये वो, they were, I mean, we were fighting a multiple. आज जो रशिया की हालत है ना सर, if I may say this, जो आज रशिया की हालत है वो हमारी हालत थी 65 में. ऑल्दो रशिया तो 2-3 साल लड़ता रहा है ये वो एंड ऑल दैट, हमारा तो खत्म हो गया सर. It was much faster than that. I But don't know how हमारे पे diplomatically, क्यों? Why I don't was know how it so much? diplomatically correct it is to answer you very frankly on this. Ironically, I think half the problem lay with the Ministry of External Affairs. Because if you actually see some of the UN key debates and stuff on Kashmir and otherwise, where Indian diplomats are speaking, they're talking such rubbish and they are talking so patronizingly. वो सबको लेक्चर देने को खड़े हुए वहां पे, किसी को कॉन्गो क्या गड़बड़ कर रहे हो आप. It was all stemming from the Prime Minister, who also had this. You see, I've read his notes, his transcript of his conversations with Chavan. He's talking about Peru, he's talking about Congo, he's talking about Egypt, he's talking about this, that, and the other. And that guy is focused. He's talking about Aksai Chin and he's talking. आप उसमें बात करना नहीं चाह रहे, आप ये करे जा रहे हो. हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर थी ना, it was very dominated by a very highly intellectual lot. Let's be very clear about that. They were all very, सब ने लंदन में ये वो किया हुआ था, वो किया हुआ था. इनकी अगर आप वो सुनो ना, आप you would really wonder ही होते कौन है हमको आके लेक्चर देने वाले. वो आपका अगर वो that thought used to creep in a lot. And we were looked at as a basket case country. The way we look at Pakistan today, everybody was looking at कि ये साले भिखारी हैं, इनका खाना है नहीं, और ये आके हमको लेक्चर पे लेक्चर दे जा रहे. So I think that also, I'm not saying that was the main reason, but it did play a role here. The Indian diplomatic community at that time was as much more brown sahib than anybody else here. So, the Sir, there is ICS. no problem answering this question. Let me assure you this, because
I mean, I as a channel identify the brown sahibs and the coolies more often than not. अगर आप मेरा कल रात का show देखें, that's basically, you know, uh, just about that, identifying the Western media and their narratives. But this is a very important thing. Let me just say this. I'd like to, place my appreciation for actually you mentioning this, because we were जो हमको उस टाइम पे होना चाहिए, जो हम उस टाइम पे चीजें करते थे, वो आज हमको करनी चाहिए एक्चुअली। I लोगों agree को with लेक्चरबाजी देनी आज चाहिए हमको। एंड दैट इज़ वेयर आई फाइंड आज के हमारे डिप्लोमेट लेक्चर नहीं करते, बिकॉज़ उनको पता है पहले क्या गलतियाँ हुई हैं हमसे। सो डोंट डू इट नाउ अगेन। तो No, but you see, तो सर you have to back what you say. You have to walk the या, talk. या, 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 And we were not doing that. We were sort of ये नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो पूरा सभी से आप दुश्मनी कर लो ना नॉन अलाइंड में या, क्या होता है आप you're telling the Americans you don't know what the hell how to run your own country. We will do everything for you. Non-alignment is the answer. The American mindset is very clear. You're either with us or against us. There's no in between कि उनका उनको ब्लैक और व्हाइट में दिखाई देता है कोई ग्रे शेड नहीं होते उस टाइम की थिंकिंग में और अभी भी perhaps the same thing applies. अभी स्टिल दे विल एक्सेप्ट, बट उस टाइम पे तो The British were anti us in any case because they created Pakistan for their own interest. What was the reason? It was the oil fields. Yeah, they wanted to retain control over Bahrain and Iraq and Iran and everything they needed. So Pakistan was created for that. Big deal. I mean, we all know that. So they were always going to be very hostile to you, no matter what you did. And let's also be frank. There are two sides to that coin. The Indian politicians, apart from Nehru, I don't want to get into Nehru bashing because, frankly speaking, unfortunately, it comes out that way because there's one mistake after the other. But I basically was the prime minister and he deserves the due respect that one needs to give to a prime minister at that time. But the fact is that every other politician, when Mountbatten came, I've referred to it earlier. I mean, they didn't even want to offer him a seat yet. जब नेहरू के फ्यूनरल के लिए वो आए हैं उनको एक कुर्सी दी गई थी साइड में these things are important. You're the man who's been the viceroy of this country. उसको साइड में जो वीआईपी इंक्लोजर है वहां जाके आप बैठ जाइए आप भी. So it's not that our people were not aware of what the British had done to us. It's not that कि अभी हम suddenly we woken up कि नो, नो, भैया we've known this all along. We didn't want to look at it. In fact, our own father's generations, yeah, I have problems with them. I used to tell my dad, I said, how the hell are you guys accepting a lot of things? In any is वी the डिडंट वांट टू लुक एट इट सर। एग्जैक्टली, You don't want to look at दैट्स it. द In डिफरेंस। fact, they looked at the rest of the country as natives. Yeah, they often use that term. Native army, native this, native that. But natives don't know how to behave. The natives are not public school types. The natives are not this. I mean, come on, yeah, give me a break. हम्म, दैट So दोस today डायलॉग्स we've we heard till the carried that. 90s as a matter of fact. Yeah, yeah, yeah. It's true. It's And only after the 2000s. Correct, sir. I think you've brought about something really interesting, sir, which is the mindset. And this is something very, very interesting. I don't think any military historian or any historian, as a matter of fact, has spoken about that. That the mindset of the country at that time was not ready to kind of understand who we really were, where we really stand, and what was really happening in and around us. we didn't even know what the hell India was. Yeah, Yeah. you know, एक stencil map. I'm telling you, school में एक stencil map आता था outline of India. So class में teacher would go and give it to everybody. ऐसे अच्छा बच्चों बताओ तमिलनाडु कहाँ है मेरी आधी क्लास फेल हो जाती थी क्योंकि पता ही नहीं है क्या ये पूरा माहौल ही बहुत अलग सा था. I mean, Yeah. look at where we've come from for 2000 years of bloody conflict here throughout. I mean, we talk about the Muslim invasions in the around 1000 after 1,000 years after Christ, but the fact is that before that, it's been one war after the other. This one's cutting that one. This continent has seen, subcontinent has seen more war than any other part of the world, and we don't talk about it. We don't even know what happened. अब हो रहा है. अभी हम वो इलस्ट्रेटेड मिलिट्री हिस्ट्री रिलीज करने वाले हैं. फिर देखो ये इसको काट रहा है, वो उसको काट रहा है, ये इसको मार रहा है, ये हो रहा है. And then we standardize things. अरे ये तो this was done by the Islamic invaders. They killed all their brothers. अरे यार Ashoka, Bimbisara and all, they were all fratricide. अपने बापों को मार के. I mean, it's been going on. What I'm trying to say is, we are a very violent country. It's all That's packed how up it right. was. That's how it was. I mean, We are actually now going through a period of
relative calm. Otherwise, my God, you couldn't step out of your house without somebody chopping your head off. It was kind of crazy. So I'll ask you one last question and take 2 more minutes for that. This is, I could really ask you with the amount of knowledge, plethora of knowledge that you have. 65 to 71, sir. I mean, I want to leave the audience because the next question I'm going to ask you, next podcast I'm going to ask you is 71. 65 to 71, sir. क्या connection था? Was there a बदले की भावना? Was there a thing कि यार हम तो पब्लिक को बता रहे हैं हम जीत गए पाकिस्तानी not us. इनके अंदर क्या था to rebuild this entire thing again? Their problem was East Pakistan. You see, a very fine officer was General Aadi. We used to work with me when we did all these films. Rajrif ke the. He was also ex-Doon School. And he finished off as the vice chief. He used to be my chief consultant. Great guy. I loved him. He was the commandant in staff college when my dad was a DS. So हमारा तो उस टाइम मैं स्कूल में था. तो हमारा तो बड़ा I was like his son. He used to often say, I have 4 daughters and I have 1 son in me. So he was BGS of Eastern Command during the war with Jacob and with Aurora. The BGS is the main guy who controls the entire movement. And he used to say one sentence for the genesis of the Pakistan problem as to what actually went wrong from the Pakistani perspective. And that was Sadda Punjabi, Sala Bengali. Mindset की बात कर रहे हो ना? Sadda Punjabi, Sala Bengali, that was where the whole bloody thing went haywire. And if you look at the 6 years between 65 and 71, you really need to see how the political scenario in Pakistan starts unfolding. The rise of Sheikh Mujibur, the way the People's Parties just get wiped out in West Pakistan, and then how Yahya Khan and all these chaps step in and they just, tell Bhutto. Bhutto is one enigmatic guy who has actually taken Pakistan to its doom. Even after they've hung him, he has still left a legacy which he's the one who's put it in their head that you're Arab and you're not Indian. Bhutto and Zia, sir, 2 most destructive characters in Pakistan. Zia is a bastard who, I'm sorry, Zia is the guy who came and led. And he Islamized the war. He Islamized the entire Pakistan army. Yeah. A different way. But the main character, and the worst part is the first half of his life he was an Indian, यार. वो तो बाद में जाके पाकिस्तानी बन गया ना. But he has put it in the Pakistani mindset that you are not Indian, you are actually Arabs. तभी तो आपके सारी columns are named after Ghazni and Gauri and this and that. Yeah, what are you talking about? You guys you were the ones who were actually opposing them first. तुम ही तो जाके पहले लड़े थे. अब आप उन्हीं के गुण गा रहे हो. करो. तो वो आपको काट पीट के बंटवारा करके चले गए. आप अब That's what I'm saying. Pakistan needs to take a reality check on its own military history. I wish the population would actually start asking questions because, as I said, I was watching this podcast on one Pakistani journalist talking about 65. And I was wondering, how can he be actually saying these things here? ये सब जानते हुए भी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अभी थोड़ा सा हैरानी होती है. It's quite sad, sir, once you see what happens in that country. Sir, thank you so much. Although I agree that I was a little different in actually asking you the questions today, the reason I wanted to do that is to connect the end with the beginning somehow and try and understand where we went wrong. And one of the biggest things that I think you've brought about very beautifully is that we didn't know what the hell was it all the game was. And yes, we had a great army, fantastic soldiers, great generals, but I guess somewhere down the line the cohesion did not set in. Great generals तो मैं नहीं बोलूँगा because actually I've got into trouble for one of the comments I've made. Even General Ved Malik said I'm being opinionated on that. I've actually said this. I said that if these guys are lucky, जिनको हमने, and I include even wonderful people. I mean, I had a great regard for Marshal of the Air Force and stuff like that. But the mistakes they made, they're lucky. मैंने तो किताब में लिखा है कि उनको अगर ये जर्मन और रशियन आर्मी में होते ना 15 साल पहले तो इनको हट के पीछे ले जाके गोली मार दी गई.
because the kind of blunders as a people, we are willing to excuse our leadership is crazy. I mean, there has to be accountability, and generals cannot let you down. The moment that happens, you've got to take action. Anyway, that's No, I just wanted to comment on the factor that it was a little unconventional of me to do that. The reason is I have not been able to understand the end from the beginning and the connection, this thing. But today's podcast has helped me understand that. The reason is I have read 2, 3 books, which is including yours, and it keeps me in a place that fair enough. I know the story, I know this thing, I know the facts, but the questions that I asked you today were the biggest questions that I had in my mind. That did we realize where we were? Did we realize what we were doing? Did the leadership at that time, of course, Nehru had gone away, and I only wonder what would have happened to this war if he was still there. And I'm not doing Nehru bashing here, but we've kind of seen it what wouldn't have happens in happened. that aspect. It wouldn't have happened. We The would have war given wouldn't have it happened. away. He had already decided to. Yeah. That committee was already there. Soran Singh committee was there with the partition maps of the valley, and वो तो लो लाइंग फ्रूट था ना उनके लिए कि अब चौकीदार तो गेट खोल रहा था, पर अब एक और आया है, वो तो बिल्कुल ही नौटंकी है उसके सामने. दैट इज व्हाट अयूब खान थॉट. बट आई एम अ ग्रेट So फैन I ऑफ guess Prime Minister Shastri. I think he was what India is, at that time. I guess I rest my case in terms of trying to connect the dots from the top to bottom. It's a little Yeah, because I told you 15 16 segments I can count off the top of my fingers. Yeah. If you yeah. further It's a start little weird. I know you were probably wondering at the beginning of ये कहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? My idea was this, sir, is to try I and wanted to realize that tell you the that, end look, and the yes, beginning. it's very complicated, this whole Yeah, 65 yeah, thing. it is. It is. But sir, Chalo. thank you so much. It's always a pleasure talking to you, and I'm going to disturb you once again. 71. God bless you, sir. I With don't know. all Still in the process of researching it and wanting to write that. but and My because biggest, because my dad was involved in that, and I'm a little reticent about it, because I visited Bangladesh with General Lumba a couple of times. We went and met their foreign minister, their Mukti Yoddha minister after Sheikh Hasina's visit, and they are far more aware. They're senior guys as to what actually 71. We have put a lid over a lot of nonsense. We've done a lot of that in 71 also. Chalo, yeah, देखते हैं. One step at a time. absolutely, sir. Thank you, Aadi, Thank for you. having me. Jai Hind, sir. Take care. Bye, Jay.